Today's lecture is on Srimad Bhagwatam 7th canto 6th chapter 3rd shloka, and so this is in regards to Prahlad Maharaj. So let's start with what this shloka is about. इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, इस श्लोक का क्या एसेंस है? चाहे जीव जिस भी मटेरियल बॉडी में हो, क्वालिटी ऑफ सेंस एंजॉयमेंट सेम रहेगा। ओके, जो श्लोक आज हमने कोट किया, सो उसके रेफरेंस में स्टार्टिंग में जो श्लोक था 7.5.3, इस श्लोक का एसेंस क्या है? प्रहलाद महाराज 7.6.3 में क्या बता रहे हैं हैप्पीनेस के रिगार्डिंग? जो सेंस एंजॉयमेंट है सारे मटेरियल बॉडीज में सेम ही रहता है, इसलिए हमें इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को ऐसे सेंस एंजॉयमेंट में बर्बाद ना करके भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। सो प्रहलाद महाराज इज टेलिंग दैट हैप्पीनेस जो है, यस दैट्स व्हाट इट इज। थैंक्स। तो जी बताए कि चाहे आप हैप्पीनेस के लिए परसीव करो, प्रयास करो, या डिस्ट्रेस के लिए, एनीथिंग इट इज, इट विल कम टू यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एंडेवर स्पेसिफिकली। सो दिस श्लोका इज टेलिंग, हु इज टेलिंग एंड टू हुम? कौन बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? यस, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने क्लासमेट्स को। यस। सो प्रभुपाद फिर बताते हैं कि पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज कुछ समझा रहे हैं, तो वो क्या चीज समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज इससे पिछले श्लोक में? यस। कौमारम आचरित प्राज्ञो दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर एंड वी शुड take out something which is Krishna consciousness from this life. Yes. So Prabhupada is saying it is not easy. There are many rascals. They say that once you come to human form of life, there is no more degradation. So this human form of life is very important. Then what does Krishna mean by Dehino Asmin? Prabhupada यहाँ पे ये क्यों, कृष्ण को क्यों कोट करे? देहिनो अस्मिन से क्या बताना चाह रहे हैं? इस श्लोक का अर्थ क्या है और इसको श्लोक को किस कंटेक्स्ट में प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं, बता सकते हैं? यस। एक्चुअली प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ रास्कल्स हैं ऐसे जो बोलते हैं कि बॉडी के बाद में सब खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो प्रभुपाद जी फिर ये भगवत गीता का श्लोक कोट करते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि ये बॉडी के बाद फिर नेक्स्ट बॉडी आपको मिलेगा, और ये गारंटी नहीं है कि वो बॉडी आपको ह्यूमन का ही मिलेगा, वो 84 लाख स्पीसीज में से कोई भी आपको मिल सकता है। करेक्ट, यस, थैंक यू। कैन यू कोट द फुल श्लोका विद रेफरेंस? कैन यू कोट द फुल श्लोका विद रेफरेंस? यस, इट्स देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहे अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। चैप्टर भगवत गीता 2.13 है। थैंक यू, वेरी नाइस। सो then Prabhupada is telling further this explanation. He gives example from Srimad Bhagwatam as evidence of Maharaj Bharat. So can anyone explain briefly why Prabhupada tells this, what he wants to tell from his life, what happened in his life? भगवान जब पहले लोग कहते हैं कि ह्यूमन बर्थ जब एक बार जब मिलता है, तो जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो ह्यूमन का ही होगा। इससे नीचे डिग्रेडेशन नहीं होगा। बट प्रभुपाद यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि जो भरत महाराज है
उनका जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो एग्जाल्टेड पोजीशन पे होते हैं। किंग जो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन है ह्यूमन बर्थ में, और उनका जो नेक्स्ट बर्थ वो डियर का होता है जो कि डिग्रेडेड फॉर्म है। तो कर्मणा दैव नेत्रेना जंतुर्देहोपत्य। ओके, यस, वेरी नाइस, थैंक्स। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? हमें क्या सीख लेना चाहिए? इसमें सीखने को ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि देखो जी ह्यूमन बर्थ अब मिल गया, अब जो भी पाप पुण्य जो भी करें हमें अच्छा जीवन ही अगला जीवन मिलेगा, तो ये गलत है। अगर कर्म अगर देवता का रहेगा तो अगला जन्म देवता का मिलेगा, कुत्ते का रहेगा तो कुत्ते का जन्म मिलेगा, और अगर भक्त का जीवन रहेगा तो अगला जन्म बैक टू गॉडेड होगा। या, थैंक्स। ओके, सो इसी को और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रभुपाद ये बताए कि can we have human life always, and what is the basis of getting next life? जैसे आपने बताया, कोई और इसको और further explain करना चाहेगा? Yes, and can you quote what Prabhupada used? He quoted a shloka. एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभुपाद जी, कैसे अगर आपके पास रॉयलेस कार है, वो अगर ख़त्म हो गई, अब दूसरी रॉयलेस खरीदना है तो उतना पास पैसा होना चाहिए। आपके पास कॉस्टली ड्रेस है तो सेम ड्रेस चाहिए तो उतना आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा उतना नहीं है तो आप उतना वो नहीं खरीद सकते, आपको कोई और लेना पड़ेगा। तो वैसे ही कर्म के हिसाब से, या कर्म अच्छे हैं तो मिलेगा अगला जीवन, अच्छा नहीं तो नहीं मिलेगा। So Prabhupada was telling karma dev netra, it depends upon your karma. So जिस तरीके कर्म करेंगे, प्रभु जी ने बताया डॉग का या डेमीगॉड का, उस तरीके से। And so regarding body, so what does Bhagavad Gita talk about our body, like motor car or something in this regard? What is the shloka in reference to our body, motor car, something, can you, प्रशांत? रूपा जी मशीन का कोड करते हैं, ऐसे भगवद गीता में है ना कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मणि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया है। तो जो माया की जो यंत्र है, मशीन्स हैं, उसमें जो है ट्रैवल करते रहते हैं। ऐसी कार का एग्जांपल दिया था, जो कार मशीन है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा मशीन भी वैसा ही मिलेगा। And in this regard, Prabhupada was telling about Rolls-Royce car. So right now we have a very nice car, but does not mean that it does not guarantee that next time also we will get Rolls-Royce car. Yeah. And in regards to this only body, what does it refer? What Krishna says regarding clothes? What is the reference in regards to clothes regarding body? What does he talk about regarding body? Yes, Sikhimatlu. प्रभुपाद यहाँ पे जो है वो लकीरा और जो Krishna, body and clothes. Bhagavad Gita. Quote a shloka. You understand? Anyone? Yes. Body and clothes. That's a श्लोक वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। Yes, yes, yes. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जिहाय अन्य नयनि संयति नवानि देहि। Yes. 2.22. Yeah. 22 I think. Thank you. Very good. No, he does not say the shloka, but he talks about the body in reference to. Yeah, he knows. Extra mark. Okay. So now, how should we, go back home, back to Godhead? Like first is like acting like a dog, or demigod, or some other way, or a devotee. So you have 4 options. Acting like a devotee. And what are we instructing to everyone? Then what are we instructing everyone? Prabhupada is telling, we are instructing everyone, we are preaching. So what are we instructing everyone to do? If we have to go back home, back to Godhead by becoming a devotee, what are we instructing everyone?
Anyone else from the back this side? हम क्या मतलब इस्कॉन में हम हैं, कुछ प्रचार कर रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं लोगों को. किस चीज के बारे में प्रभुपाद कह रहे थे? What are we telling to people to do? Yes, yes. जैसे बहुत सारे लाइफ है उसमें भागवतम को नहीं समझ सकते हैं. ये ह्यूमन लाइफ ही रेयर है, अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप समझ सकते हो और यहाँ से जा सकते हो, तो इसका आप फायदा उठाओ. Yeah. So we are instructing everyone to become Krishna conscious. Yeah. And the result will be like. Okay. And what will be the result like? अगर ये चीज हो जाता है तो, अगर हम इस चीज को करते हैं, प्रयास सबको बोलते हैं आप करिए, तो उनको क्या मिलेगा, क्या होगा उनके साथ आगे? या आप बताइए पीछे. Krishna face to face. Yeah. Meet होगा. If people will follow Krishna consciousness, then in next life they will get the opportunity to see Krishna face to face. Thanks. Also play with him. And then Prabhupada was talking about Mayavadis. This is something very important to talk about, right? Who are Mayavadis? What do they say about Krishna? And you can talk about this. Who are Mayavadis and what do they say about Krishna? हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये मायावादी होते हैं ये हालांकि ये जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो कहते हैं कि माया के द्वारा ही बने हुए हैं और वो कृष्ण को भी माया बताते हैं और वो सभी चीज को माया बताते हैं. और बॉडी कैसा है भगवान का? वो माया का ही बना हुआ है, सब कुछ माया है. Yeah. And then what does Krishna tells about these Mayavadis? भगवान क्या बोलते हैं इनके बारे में फिर? और भी डिवोटीज हैं, और भी anyone else? ये तो बहुत कॉमन चीज है. What does Krishna says about these Mayavadis? rascals. Krishna does not. Yeah, Sanskrit. Okay. Avjanante maam moda. Yeah. What can you quote? They cannot know me because they are fools. हाँ, प्रभु जी कोट पूरा श्लोक बताएंगे. अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रिता परम भावम न विजानन्तो मद भावम परम भावम अवजानन्तो मद भावम मद भावम महेश्वर. Very nice. Bhagavad 9.11. So Krishna is telling basically they are not so intelligent, right? So now what does Prabhupada tells about these Mayavadis? Now you can tell first. बोलिए. अरे आप चुप हो गए, बताइए. Okay, so what you were telling, bro? What does Prabhupada tells about these Mayavadis? Okay. So, Prahlad Maharaj, what does he talk about regarding the purpose of human life? What Prabhupada again came back to this discussion. What does Prahlad Maharaj says? And he specifically quotes a shlok, what Prahlad Maharaj says. Very popular shloka. Yes. Very popular श्लोका. इसी के जस्ट पहले एक दो श्लोक पहले ही है और उससे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में बता रहे हैं, अपने ही फ्रेंड्स को बता रहे हैं. बहुत ही कॉमन श्लोका है. प्रहलाद महाराज, हमारे लिए भी कई बार वो कोट करा जाता है, ब्रह्मचारी इसके लिए भी. यस यस. This human life is very dullabam. हाँ. Dullabam manusham janma. I don't know full shloka actually. Okay. Yes, yes. And Prabhupada in this saying, that means if you are doing anything except Krishna consciousness,
That means you are risking your life to become a cat and dog or anything else. That is a fact. So this is what Prahlad Maharaj is trying to tell. And are Devtas pure devotees? Why not? Yes. Devtas, they have material desires. They are not pure devotees. They accept Krishna as God, but they have material desires. Yes. Yeah. And okay, now there is a fill in the blank. Okay. Anyone who comes to Krishna consciousness, he is to be understood that he is a dash. Very simple. Yes. He is pious. Yes. And following this only, but piety, to become pious man, does not mean that he is a dash. Yes. He is a devotee. Yes. So means piety करने से जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति जो है पायस कर्मा करने से वो डिवोटी बनेगा. तो फिर प्रभुपाद बताते हैं इसी रेफरेंस में कि कई सारे लोग बहुत बड़े बड़े राजघरानों में पैदा होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, पैसा होता है ना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जैसे BA, MA, PhD, DHC, all titles, beautiful body, all these are result of dash. Yes, yes. All this is result of pious activity. Yes. Thank you. So then, what does if Devta does not mean a devotee, and all these things are material things, pious activities, then what is the aspiration of devotee? To become or to have a beautiful body, to take birth in rich family, to be very wealthy, or no material aspirations. Okay, then who is answering? No material aspiration, किसने बोला? Say. हाँ? No material aspiration? Question, क्या aspiration होती है भक्त की? Beautiful body, rich family में birth, wealth या no material aspiration? डिवोटीज की एस्पिरेशन होती है. यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे चैतन्य महाप्रभु ने जो 66 श्लोक है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम्य मम जन्मने जन्मेश्वरी भवताद भक्ति अहेतु के तुगे. Yeah, very good. And another Prabhupada was telling from Bhakti Rasamrita Sindhu. Yes, Prabhuji go. Prashant. हाँ. अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूलेने कृष्णानुशीलनम भक्ति रुचित. Yes, thanks. 1.2.6. Yeah. Last question. Then at the end, Prabhupada was telling what is the better taste and what is our business. What is the better taste and what is our business? Krishna consciousness is better taste. Okay. And compared to what it is better? Sense gratification. Yes. And what is our business? To become Krishna conscious. And can you quote Prahlad Maharaj what he is told? But Prabhupada फिर से इसी चीज को बता रहे थे. You have got the opportunity to understand what is Bhagavad Dharma. Don't lose it like cats and dogs. Hari Hari Bol. All goes to Srila Prabhupada. Very Krishna. Yeah.